Welcome students in English class. As we were reading the chapter, the third lesson in class 11, discovering that the the saga continues. This is the fourth video from the same series. So the next point, last time we read about King Tut, who reigned on Egypt for 9 years, and after reigning of his 9 years he died unexpectedly. No one knows the reason how and why did he die. He died in young age. After that, the next paragraph tells about the mummy. The mummy was found after digging the tomb of Tut. Tut's mummy was one of the many mummies found in that valley of kings. How many? No one knows this. The Egyptian mummy project that began in 2003. Since then to the 2005, in 2 years, they have found 600 plus mummies, and they has recorded 600 plus mummies, and still it is counting. The counting is going to continue. Next point is about scanning mummy. The mummy was scanned, and the Tut's mummy was one of the first mummies to be carried to be scanned. The scanning was done with the portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. The National Geographic Society and Siemens donated mummy to the archaeologist department, and they started scanning mummies with that CT scan mummies that was portable. So Tut's mummy was one of the first mummies to be carried to scan. Next, all of the regalia ahead of its countrymen. Regalia ahead means the Tut's mummy was leading all other mummies. Tut's mummy was the first mummy to be scanned, so it was leading other mummies. So it was first. It was ahead and to show what happened to his countryman. Next paragraph tells about the mummies when it CT scanned. What happened when it CT scanned? So we can see the points one by one. First point. The mummy was scanned from head to toe. The Tut's mummy was scanned from head to toe, and it created about 1700 digital X-ray images in cross sections. How many images? 1700. And what type of images? Digital X-ray images. And it's in which form? In cross sections. Next point. Although first the head was scanned, and it was scanned in 6.02 millimeter slices. Why it was scanned in 0.62 millimeter slices? Because the technicians wanted to register its intricate structures. Intricate structure means they wanted to make the complete structure of the head, and they wanted to see what happened to the head. Was it damaged or not? They wanted to see it. So they took an eerie detail in the resulting image. Eerie details means when they started taking minimum millimeter slices, it will give the complete detail about the mummy. Next point. First head was scanned. After that, entire body was
recorded in the same process with the same records. Specialists of radiology, forensics, anatomy, they probed means they found about the mummy that the winged goddess of a gilded burial shrine protected the mummy, because there was no damage when they scanned the complete mummy, they found no damage anywhere anyhow. So they guessed that winged goddesses जो परियां होती, विंग वाली परी, पंखों वाली, तो winged goddesses of gilded burial की जो परियां थी और जो श्राइन थे, जो देवता थे, उन्होंने उस मम्मी की सुरक्षा की थी. They started to think this when they found that after so long time the mummy was not damaged at all. Next point is about the night, tells about the night when the mummy was scanned. The workmen carried Tut from his tomb, and they carried it like bell bearers. They climbed a ramp. Bell bearers means they were carrying and struggling very hard. When they were carrying the mummy from the tomb. First they climbed on the ramp and to the stairs. रैंप से चढ़ते, जो उन्होंने तख्त बना रखी थी, वहाँ से चढ़ते हुए वे सीढ़ियों तक लाने में उनको बहुत परेशानी हुई, इसलिए ये फ्रेजल वर्ब फ्रेज यहाँ पर यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, दे रोज ऑन अ hydraulic lift into the trailer. They put the body in a hydraulic lift. The hydraulic lift carried the dead body to the trailer. In the trailer, CT machine was put there. So after 20 minutes later, two men emerged. Why they emerged? They emerged, sprinted for an office nearby. 2 लोग 20 मिनट के बाद दिखाई दिए जो ऑफिस की ओर को जा रहे थे. They were going to the office, and when they returned with a pair of white plastic fans. They went there in the office, and after some time they returned with a pair of white plastic fans. Next point, the scanner had quiet because the sand in a cooler fan, because of sand in a cooler fan. Did you understand the line? It means the scanner stopped working because the sand entered into the machine, the cooler fans. So for cooling the scanner, the man brought 2 fans, plastic fans. And when the scanner stopped, the guard joked, while he was nervous, but he joked, curse of the pharaoh. तो जैसी मशीन रुकी तो वह बोल पड़ा नर्वस होते हुए कि यह कहीं फेराउस का कर्स तो नहीं है, फेराउस का अभिशाप तो नहीं है. He told this. Next paragraph tells about the procedure, about the process of CT scan. So a substitute fence worked. The substitute fence that was brought by the 2 workmen, 2 workmen जो substitute fence लेकर आए थे, उन्होंने काम कर दिया. And the technicians checked, no data had been lost. They found that all data was saved in the computer scan. Technicians turned it over to the workman. वर्कमैन को उन्होंने वह डेड बॉडी, टूट की डेड बॉडी वापस कर दी. एंड द वर्कमैन ब्रॉट इट टू द टॉम्ब वेयर द टूट रेस्टेड इन पीस अगेन.
टेक्नीशियन ने टूट की बॉडी वर्कमैन को वापस कर दी। टूट और वर्कमैन ने उसे दोबारा से टॉम्ब उसकी कब्र में रख दिया जहाँ वह आराम करने लगा। टूट अगेन आराम करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेल्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का क्या रिजल्ट हुआ? वर्चुअल इमेज वॉज बिल्ट। एक वर्चुअल इमेज कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बनाई गई। हाउ टेक्नीशियंस पुल्ड अप द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो उन्होंने दे बिल्ट अ वर्चुअल इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन and it was very astonishing image. First, a grey head took shape from a scattering of pixels. उस हेड के उन्होंने 1700 स्लाइसेस बनाए थे 0.62 mm में। उन स्लाइसेस को आपस में जोड़ा गया तो एक उन स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स से एक ग्रे कलर का हेड 3D सेक्शन 3D पिक्चर उस हेड की बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, spun and tilted it in every directions. The technicians spun and tilted it in every direction. It means they moved the head in every direction. और सभी डायरेक्शन से देखा कि कोई इमेज तो मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, neck vertebrae appeared very clear. The neck vertebrae, जो neck vertebrae थी जो रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड रहती है, वह हड्डी वह बोन that was appeared very clear. Next, a hand was appeared. Next, rib cage was built. Next, the transections of the skull was built. इस तरह से पहले सर बना, सर के बाद उसकी जब जांच हुई तो उसके बाद नेक वर्टेब्रे को चेक किया गया, वो बना। उसके बाद हैंड की पिक्चर बनाई गई, उसके बाद रिब केज की पिक्चर, उसके बाद कंप्लीट स्कल बन के उभर के सामने आ गया। नेक्स्ट इज इन पॉइंट यू कैन सी दैट नाउ जाहिर हवास बिकेम रिलैक्स्ड। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाहिर हवास स्माइल्ड, और स्माइल करते हुए ही सेड नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। कुछ भी बहुत गलत नहीं हुआ। ही स्माइल्ड एंड सेड, फर्दर ही सेड I did not sleep last night. I didn't sleep last night. Not for a second, he said. I was so worried, but now I will go and sleep. तो उसने क्या कहा, पिछली रात को मैं सो नहीं पाया, एक भी सेकंड नहीं सो पाया, मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब मैं चला जाऊंगा और सो जाऊंगा। Because he has got a satisfactory result from the CT scan. Next, the technicians left the trailer where the CT machine was kept, left the trailer, and they descended on the metal stairs to the sandy ground. ट्रेलर से उन्होंने CT स्कैन मशीन के साथ वो लोग उतरे और स्टेयर्स, मेटल स्टेयर्स से होते हुए सैंडी ग्राउंड पर वे लोग नीचे पहुंच गए। द विंड हैड स्टॉप्ड एंड winter air lay cold and still, like death itself. Just above the entrance of the Tut's tomb stood Orion. Orion, the soul of Osiris. Who was Osiris? The god of afterlife. इसका समझ लीजिए थोड़ा सा। जब उन्होंने कंप्लीट कर दिया CT स्कैनिंग, पूरी पिक्चर वगैरह बना दिया, उन्होंने रिजल्ट पा लिया, तो वे लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने टूट की टॉम्ब की ओर को, उसके मकबरे की ओर को दोबारा देखा। तो उन्होंने देखा कि ठीक एंट्रेंस पर, ठीक दरवाजे पर, टूट की टॉम्ब के दरवाजे के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था। ओरियन कौन है? ओसिरिस की सोल को कहा जाता है। ओसिरिस की सोल कौन है? द गॉड आफ्टर लाइफ। वह गॉड जो आफ्टर लाइफ डेड बॉडी की रक्षा करता है, उसे ओरियन ओसिरिस की स्पिरिट कहा जाता है। यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक दैट हैज़ बीन मेड इन द लास्ट पेज। लास्ट पेज में तुम देख सकते हो टूट के साथ एक गॉड की पिक्चर, वही गॉड को ओरियन, और वह उसकी वॉल पर बनाई, उसकी टॉम्ब की वॉल पर बनाई गई पिक्चर का एक नज़ारा है। यू कैन सी दैट।